आज की इस वीडियो में आप आइल्स का प्रैक्टिस लिसनिंग टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन ये टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप जाकर पहले वो वाली वीडियो देखें जहाँ हमने आपको आइल्स के लिसनिंग टेस्ट के रिलेटेड डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो इस टेस्ट में। वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो बहुत यूज़फुल हैं और वो आप इस टेस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ जाएगा, तो पहले वो जाके देखें, फिर इधर आकर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस टेस्ट में बेसिकली दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेकंड है मैचिंग। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आइल्स लिसनिंग टेस्ट के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर MCQs हैं तो सिर्फ MCQs टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल MCQs टाइप भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, मैचिंग भी हो सकती है, मैप लेबलिंग भी हो सकती है। उन सब क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना होगा। आइल्स के लिसनिंग टेस्ट के फॉर्मेट के बारे में मैंने एक डिटेल से पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब इस टेस्ट में बेसिकली आपको पहले कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको बताएगा कि कॉन्वर्सेशन किसके दरमियान हो रही है और क्यों हो रही है, यानी क्या थीम है उस कॉन्वर्सेशन का। ठीक है, अभी जो आप कॉन्वर्सेशन सुनेंगे वो बेसिकली कॉन्वर्सेशन एक कस्टमर और मूविंग एजेंट के दरमियान में होगी। मूविंग एजेंट क्या होता है? बेसिकली मूविंग एजेंट वो होता है जो आपको शिफ्टिंग में मदद करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और सिटी में जाना चाहते हैं तो आपका जो सामान है, वो सारी चीज़ें जो शिफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बेसिकली एक मूविंग एजेंट की होती है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये एक कस्टमर और एक मूविंग एजेंट के दरमियान में है। तो टेस्ट से पहले आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। उस टाइम को आपने अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना है और सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह आपने पढ़ना है फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में आपके लिए सिर्फ राइटिंग और लिसनिंग का काम रह जाएगा। रीडिंग आप अच्छी तरह पहले कर लें ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन का सामना करना पड़े। टेस्ट के एंड पर मैं आंसर्स दे दूंगी। आज के इस वीडियो के PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो लाजमी जाके डाउनलोड कीजिएगा। तो इस टेस्ट का फर्स्ट पार्ट गौर से सुने। 10 क्वेश्चन होंगे और उनमें से 6 क्वेश्चन जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स और 4 क्वेश्चन बेसिकली होंगे मैचिंग के। अपने पास पेन और रजिस्टर रखें ताकि आप छोटे छोटे जो नोट्स हैं उनको नोट कर सकें और आंसर्स उस पर आप लिख सकें। इस टेस्ट में आपने स्पेलिंग्स का भी बहुत ख्याल रखना है, तो इस ऑडियो को गौर से सुनें। Section 1. You will hear a conversation between a customer and a moving agent. First, you will have some time to look at questions 1 to 6. Now, listen carefully and answer questions 1 to 6. Good day. You've reached Waikato Swift Removals. How can we be of service? Hello. I don't know where to start. My situation is just so frustrating. I see. If I were to guess, I'd say you're relocating, and it seems like an impossible task to you. Spot on. I'm moving from New Zealand to Canada this month, and there's so much stuff that I absolutely need to bring along with me. You've called the right place. We specialize in such things, but we'll need to know a few details to be able to help you. Let's start with your full name and your phone number. It's Ruby Thompson, and you can reach me at 02637 99785. If I'm not available, you can leave me a voicemail and I'll call you back as soon as possible. Very well. We'll also need to know the pickup location. Will it be in the Waikato region? Yes, I'll have my things prepared for pickup at 119 Avalon Drive. That's Avalon Drive in Hamilton, Waikato, New Zealand. Splendid. And what would be the delivery address in Canada? During the first few months, I'll be staying at 2096 Jasper Avenue. That's JASPER Avenue in Edmonton, Alberta, Canada. Alberta? A friend of mine lives there. I've heard that the weather there is somewhat more extreme. In any case, when would you like us to schedule the pickup? Next Wednesday would be ideal. That'll be January the 9th. Yes, that's perfectly possible.
Would you also like us to clean after the pickup? We gladly offer it to all our customers for a minor fee. Many people find it very time-saving. Sure, I think it'll be especially called for in my case. I'm ending my tenancy on Saturday, January the 12th, and the house will have to be neat and tidy by then. This means that we'll schedule all the cleaning for Friday the 11th. This will give the house at least 12 hours to stop smelling like detergents. Thank you. That's very thoughtful of you. How much will I have to pay in total? You can estimate this by visiting our website and using our online cost calculator. Let's see. Oh, wow. Your company's services seem rather pricey. Indeed, many removal companies offer lower prices, but they do so at the cost of quality. We prefer to stay honest with our customers. International moving is a costly endeavour, and we believe that the removal companies that tell you otherwise lack in integrity. You have a point. There's something else I need to clarify with you. Will it be possible to store my things for 2 months before shipping them to my address in Canada? I'll have a lot on my plate soon after moving there, and I'd rather unpack everything when I settle down. Certainly. We'll simply keep your things in our storage until you confirm that you want us to ship them. Our customers do it all the time. Perfect. What a relief. अब फर्स्ट सेक्शन आपने अटेम्प्ट कर लिया, वो था फिल इन द ब्लैंक्स वाला. अब सेकंड सेक्शन है मैचिंग. तो आपने इसको बहुत गौर से सुनना है क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है इस सेक्शन में. तो आपने गौर से सुनना है और एनालाइज करके आपने इसको अच्छी तरह आंसर करना है. Before you hear the rest of the conversation, you will have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. Do you have any preferences when it comes to packing? We believe that it's important to consider the requests from our customers throughout the pickup. This ensures that everything gets packed in the way that you prefer. For instance, you may want to pack certain items together to make it easier to unpack them later. I can't think of anything like that at the moment. Most people seem to be fussy about dishes and clothes. Is that your case as well? That's right, my wardrobe. I'd appreciate it if you could pack my clothes in a way that is easily accessible. Understood. We'll be sure to pack all your clothes in what our company refers to as at-hand package. Will there be any other requests? Yes, my coffee maker is worth special mentioning. It was one of the few belongings that my great-grandparents took with them when they moved to New Zealand. As you can tell, it holds special importance for my family. Fascinating. Because this coffee maker is so valuable to you, we'll store it along with other high-value items that you have. Speaking of which, I've a collection of family photos that will need careful handling. All these photos have been backed up, so there's no need to place them along with valuable items, but I would prefer them to be packed together with my personal things. I understand completely. We'll put all your family photos in your personal container. Will you be specifying any other preferences? Yes, one more thing. I've an expensive computer that I sadly can't take with me. It's brand new and it has cost me a pretty penny. I'd love for it to go into high-value items as well, although I'm afraid it's too bulky for this category. No worries. This section with all your other high-value items will certainly fit your computer in. We'll also label it as a fragile item. Thank you. That'll be it. Will you be able to provide me with a list that mentions where everything is packed? Of course. We make such lists for all our customers. They make unpacking a lot less stressful. Indeed. You're very thorough. We try our best. It seems that we've covered all the bases, and everything is ready for us to begin moving your things as we have discussed. I'm so relieved now. I'll just take my luggage and be on my way to Canada. You can rest assured that your things will be safe with us. We wish you a safe journey. I certainly count on that. And thank you very much. Bye. Goodbye. होपफुली आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे. अब मैं आपको आंसर्स दिखाती हूँ इस टेस्ट के रिलेटेड. फर्स्ट आंसर है
कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर। सबसे पहले जो कस्टमर नेम है वो दिया गया है, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर। कस्टमर ने अपना कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर इस हिसाब से दिया था, वो कह रही थी यू कैन रीच मी एट। अब यू कैन रीच मी एट का जो फ्रेज़ है वो बेसिकली कॉल के लिए ही होता है कि आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू से दैट यू कैन ऑल्सो से यू कैन रीच मी एट। तो कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर जो है उसने बताया वो 0263799785। अगर आपने ये सही लिखा है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली वो जो मूविंग एजेंट होता है वो पूछता है कि आपकी जो शिफ्टिंग का सारा सामान है वो कहाँ से कलेक्ट करना है। तो वो एड्रेस बताती है, वो स्पेलिंग भी बताती है एवलॉन ड्राइव की। तो होपफुली आपने वो स्पेलिंग ठीक लिखे होंगे। एवलॉन AVALON ड्राइव, एवलॉन ड्राइव। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है जैस्पर एवेन्यू। ठीक है, सबसे पहले तो उसने पूछा कि कहाँ से उठाना है सामान और किधर शिप करना है। शिप का मतलब है मुंतकिल करना या पहुंचाना या कहीं लेके जाना। तो एड्रेस में इसने बताया जैस्पर एवेन्यू और स्पेल भी किया है कस्टमर ने, तो JASPER एवेन्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिपमेंट की प्रिपरेशन कब करनी है। शिपमेंट यानी शिफ्टिंग वगैरह की प्रिपरेशन कब करनी है, तो वो वेडनेसडे बताती है, वेडनेसडे जनवरी द 9th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सैटरडे। अब बेसिकली ये जो मूविंग कंपनी है ये क्लीनिंग सर्विसेज भी देती है, यानी शिपमेंट के बाद साफ़ सफाई की जो सर्विसेज है वो भी ये कंपनी देती है। टाइडी अप द लोकेशन साइट पर 9 AM ऑन, तो वो टाइम बताया है उसने सैटरडे जनवरी द 12th। अब यहाँ पर स्टोरेज की भी सर्विसेज दी जाती हैं, यानी शिपमेंट से पहले अगर आप स्टोर करना चाहते हैं अपना सामान तो ये कंपनी वो भी सर्विसेज दे रही थी। तो कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है कि 2 महीने उसका जो सामान है वो स्टोर कर दिया जाए, तो इसका आंसर था 2 months। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है मैचिंग। अब मैचिंग में बेसिकली जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ABC, रेडिली एक्सेसिबल, A ऑप्शन, B ऑप्शन पर्सनल ऑब्जेक्ट और C ऑप्शन प्रेशियस आइटम्स। अब इन तीनों में आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। रेडिली एक्सेसिबल का मतलब होता है आसानी से आप उसको हासिल कर सकते हैं, और B ऑप्शन पर्सनल ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो पर्सनल आइटम्स है उनको पर्सनल ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। अब जो थर्ड ऑप्शन है प्रेशियस आइटम्स यानी कीमती चीज़ें, तो ये जो चीज़ें दी हुई हैं इनको आपने मैच करना था ABC ऑप्शन के साथ। अब क्लोथ्स जो हैं वो रेडिली एक्सेसिबल होंगे। कॉफ़ी मेकर उसने बताया है कि ये बहुत प्रेशियस है और महंगा है, क्योंकि इसकी जो ग्रैंड मदर थी कस्टमर की वो उसका ये कॉफ़ी मेकर था, तो ये जो है ये प्रेशियस आइटम्स में जाएगा। फैमिली फ़ोटोज़ ऑब्वियसली ये पर्सनल ऑब्जेक्ट्स में जाएगा। और कंप्यूटर उसने पहले बताया है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि ये प्रेशियस आइटम्स में जाएगा। आपने ऑडियो तो सुनी होगी, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसको हम गलत अक्सर प्रोनाउंस करते हैं, तो वो जो वर्ड्स है उनकी प्रोनाउंसिएशन स्टडी करते हैं। फर्स्ट है फ्रस्ट्रेटिंग। नेक्स्ट है वेंसडे। नेक्स्ट है डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट estimate। Next thoughtful। Next prefer। endeavor। certainly। perfect। preferences। wardrobe। appreciate। accessible। photos। specifying नहीं होगा, specifying होगा। fragile। thorough। अब नेक्स्ट वोकैबुलरी की तरफ जाते हैं, यानी इसमें कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जिनकी मीनिंग हम अब स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे है रीलोकेटिंग, उर्दू में इसका मायने होगा नकल मकानी करना। नंबर 2 पे है स्पॉट ऑन। ठीक है, ये एक फ्रेज़ है, यानी इनफॉर्मल स्पीच में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी चीज़ से मुतफिक हों। स्पेशली कॉल्ड फॉर, खुसूसी तौर पर बुलाया गया। एंडेवर, कोशिश करना।
अ लॉट ऑन माई प्लेट, याद है कस्टमर कहती है आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट, इसका मतलब है मसरूफ़ होना। कॉस्ट ए पेनी, जब कोई चीज़ महंगी होती है उसके लिए हम कह सकते हैं कॉस्ट अ पेनी। नेक्स्ट है फ्रजाइल, नाजुक। वेरी थॉरो, इसका मतलब है काम को एहतियात से मुकम्मल करना। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई और ऐसे की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं आइल्स के रिलेटेड, तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।